And welcome all of you. Let's start with our next question, that is merging sorted arrays. So you are given two integer arrays num1 and num2 sorted in a non-decreasing order, means increasing order, and two integers m and n representing the number of elements in num1 and num2 respectively. We have to merge num1 and num2 array into single sorted arrays in non-decreasing order. Okay, the final sorted array should not be returned by the function, but instead be stored inside the array num1. So we don't have to make any other array. It should be bigger of one space complexity. To accommodate this, num1 has a length of m plus n, where the first m elements denote the elements that should be merged, and the n elements are set to 0 and should be ignored. Nums2 has a length of n. Okay, so let's make it more clear with an example. So if we have a nums1 like this with m equals to 3, means 3 elements in num1s and rest of them are marked as 0. Nums2 with 2, 5, 6, that also having 3 element, and we have to merge them in ascending order in a sorted manner. Okay, so this has to be, I think this will be easy. Let's see how the intuition will work. So we have a array. Okay, so let's say the array is 1 2 3 3 4 0 0 0. Let's select this, and the another array is 2 4 6, like this. Okay, so here the m is equals to 3, n is equals to 3. We need to make another array, and that array should have all the elements in a sorted manner. So it should be like 1 2 2 3 3 4 4 and 6. This should be the final answer, and that will have m plus n elements. Okay, so that is 6 elements. So definitely these three positions has to be filled using this nums2 as a array. How will I do it? The first thing which that comes in my mind is that we will have to have two pointers, right? um, So how will I start with the first pointer? We'll see that, okay, if we'll start with this value, right? Because I have to insert from here. So we'll start from this value. We'll see if this value and this value has which one is the bigger one. So if this is bigger one, we'll put it inside here and we'll reduce the value here for n, and this will increase the value here. Okay, and if this is the value, if this is the bigger value, or this is the bigger value, right? No, the comparison will, m will stay here. M will compare with this first of all, whichever is the biggest one. So let's say this is bigger, so we'll keep this. We'll add one more value in m, last value. This will stay like this. ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली एरेज में हम दोनों एरेज के लास्ट को कंपेयर कर रहे हैं, और लास्ट को कंपेयर करते जा रहे हैं, जो भी शॉर्टर है उसको इनपुट में डाल रहे हैं, या जो भी लार्जर है उसको इनपुट में डाल रहे हैं, तो कोई भी लॉजिक हम लगाए, ठीक है। तो अगर लार्जर है तो हमें इनपुट में डालते जाना है और इसको रिड्यूस करते जाना है। लास्ट में हमारा जितना भी वैल्यूज इस वाले नम्स टू एरे में बचेंगी उसको हम ऐड कर देंगे। सिंपल बेसिक लॉजिक ये है कि एम प्लस एन तक चलाना है, राइट। लेट्स ट्राई, देखते हैं एक बार कोड करके देखते हैं इसका कोड कैसे होगा। ओके, सो अगर हम इसको चलाएं तो हम सबसे पहले तो एक हमारे पास लास्ट होना चाहिए, ठीक है, जो कि नम्स वन का ही लास्ट है, वो है एम प्लस एन वैल्यू तक जा रहा है ना, एम प्लस वन माइनस वन। ओके, तो उसका इंडेक्स हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें करना है, हम मर्जिंग कर रहे तो वाइल एम शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं, लास्ट से ला रहे हैं, एंड एन शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो। दोनों ही कंडीशन में इस तरीके से हमें चलाना है, ठीक है। चेक कर लेंगे इफ nums 1 nums m, okay, so if nums 1 m is greater than
nums टू n, ओके। तो एम एन एन नहीं रखेंगे, एम एन एन एम माइनस वन एन एन माइनस वन रखेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट एलिमेंट को हमें देखना है, तो एम इज नॉट द लास्ट एलिमेंट, एलिमेंट इंडेक्स के हिसाब से एम माइनस वन लास्ट होगा और एन माइनस वन लास्ट होगा। ठीक है, तो अगर अगर नम्स वन का एलिमेंट बड़ा है तो नम्स वन के एलिमेंट को हमें लास्ट में डालना है। तो नम्स वन के नम्स वन के लास्ट में हमारा एलिमेंट चला जाएगा नम्स वन का एम माइनस वन, राइट। और अगर ये एलिमेंट गया है तो किस में डिक्रीमेंट करेंगे? एम में डिक्रीमेंट करेंगे, सिंपल, राइट। नहीं तो एल्स क्या होगा? एल्स हमने कर लिया नम्स वन के नम्स वन के लास्ट में नम्स टू का एन माइनस वन चला गया, ठीक है, सिंपल। और हमने डिक्रीमेंट किस में किया? एन माइनस इक्वल्स टू वन में। दोनों ही केसेस में लास्ट में हमेशा डिक्रीमेंट करना ही है। सो लास्ट माइनस, ठीक। अभी अगर हम इसको देखेंगे और इसको चलाएंगे तो कहीं ना कहीं फेल होगा। क्यों? क्योंकि नम्स टू अगर खाली है कि नहीं हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो हम ये भी चेक करेंगे कि नम्स वाइल नम्स एन इज ग्रेटर देन जीरो वाइल दिस इज ग्रेटर देन जीरो, हमें इसमें हर वैल्यू को, जो भी वैल्यू है नम्स वन की, उसको लास्ट में डाल देना है। सो लास्ट नम्स टू के एन माइनस वन, राइट। और एन इन डिक्रीमेंट करना है, एंड लास्ट भी डिक्रीमेंट करना है, सिंपल। इसको चला के देखें। आई होप सी ऑल द टेस्ट केस आर पास, ठीक है। इसको सबमिट करते हैं। वर्क्स, ओके, ग्रेट, दैट्स इट।